સૌને નમસ્કાર। ફરી પાછા આપણે લાઈવમાં બધા ભેગા થયા છીએ અને ફરી આપણો એ જ વિષય છે કે હું દુષ્યંત કુમારની જે ગઝલો છે એ લઈને આવ્યો છું। આ દુષ્યંત કુમાર વિશેનું આપણું ત્રીજું લાઈવ છે। તો પહેલાં આપણે મિત્રોને જોડાવા દઈએ, પછી આપણે ચાલુ કરીએ દુષ્યંત કુમારની ગઝલો। અને આ ગઝલો દુષ્યંત કુમારની જે છે એમાં જે મને ગમતી ગઝલો છે એનું હું પઠન કરીશ। આ બુક છે સાયમે દુઃખ એમાંથી। તો આપણે પહેલાં મિત્રોને જોડાવા દઈએ, પછી આપણી વાત સ્ટાર્ટ કરીએ। હા, હમણાં વાતાવરણ પણ એવું છે, હવે લાગે છે કે ચોમાસું ચાલુ થઈ ગયું હોય, કેમ કે વાતાવરણ એકદમ વાદળછાયું અને ગમે ત્યારે વરસાદ આવી જાય, જેને આપણે કહીએ ને કે ગોરંભાયેલું વાતાવરણ, એવું વાતાવરણ છે। આ ગોરંભાયેલા વાતાવરણ ઉપરથી મને એક વાત યાદ આવી, એ હું તમારી આગળ શેર કરવા માગું છું કે આજે ગોરંભાયેલું વાતાવરણ એટલે કે જેમાં આકાશ એકદમ ઘનઘોર વાદળોથી છવાયેલું હોય અને વરસાદ પડું થઈ રહ્યો હોય, એકદમ આમ કહીએ ને કે આપણને એકદમ અંધારા જેવું લાગતું હોય, એને ગોરંભાયેલું વાતાવરણ કહે છે। અને આ ગોરંબો, એના ઉપરથી હું શબ્દ લઉં છું ગોરંબો। ગોરંબો નામથી મારા પિતાજીનું એક પુસ્તક પણ છે, ગોરંબો। એમાં એમને ગઝલનો સંગ્રહ છે ગોરંબો। એ પુસ્તક 1996માં છપાયું અને એમાં જે ગઝલો છે એ એટલી બધી સારી અને એટલી બધી માર્મિક ગઝલો છે કે તમે વાંચો તો તમને ખૂબ જ મજા આવે। તો એની પછી હું વાત કરીશ। ગોરંબો મનીષ પરમારનું પુસ્તક છે, એની પછી વાત કરીશ। અત્યારે આપણે આ તો ખાલી મને યાદ આવી ગયું કે કેમ કે વાતાવરણ પણ ગોરંભાયેલું છે અને મારા પિતાજીનું પુસ્તકનું નામ પણ ગોરંબો છે એટલે। અને એમાં ગઝલો પણ એવી જ સુંદર છે, એની પછી વાત કરીશું। પણ અત્યારે આપણે જે વાત કરવાની છે એ દુષ્યંત કુમારની ગઝલો વિશે વાત કરવાની છે। તો દુષ્યંત કુમારનું પુસ્તક સાયમે દુઃખમાંથી હું એક ગઝલનું પઠન કરું છું, બધા સાંભળજો અને દાદ દેજો। इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, या इसमें रोशनी का करो इंतजाम और। કેટલો સરસ શેર છે। इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, या इसमें रोशनी का करो इंतजार और। आंधी में सिर्फ हम ही उखड़कर नहीं गिरे, आंधी में હમણાં આપણા ગુજરાત ઉપર તાઉતે નામનું એક
તૂફાન આવ્યું હતું, તો એમાં ખેડૂતો અને ઇવન બધાને ઘણું બધું નુકસાન થયું હતું એમાં. તો એ જે તૂફાન આવ્યું હતું એ ટાઈપનો એક શેર છે કે આંધી में सिर्फ हम ही उखड़ कर नहीं गिरे, જેમાં આપણને મિજાજ દેખાય એવો શેર કે आंधी में सिर्फ हम ही उखड़ कर नहीं गिरे, हमसे जुड़ा था कोई एक नाम और. એટલે આંધીમાં હું એકલો જ મને એકલાને જ નુકસાન નહોતું થયું, પણ મારી સાથે એક નામ જે જોડાયેલું હતું એનું પણ નુકસાન થયું હતું. એટલે આ એક પ્રેમી અને પ્રેમિકાની વાત છે કે એકબીજાનો પ્રેમ બતાવ્યો છે આ શેરમાં કે आंधी में सिर्फ हम ही उखड़ कर नहीं गिरे, हमसे जुड़ा था कोई एक नाम और. मरघट में भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, मरघट में भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निजाम और. अब आओ अरविंद सोलंकी, अजय अरोड़ा, आओ, मोस्ट वेलकम. मरघट में भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निजाम और. घुटनों पे रख के हाथ खड़े थे नमाज में. थैंक यू, थैंक यू अजय अरोड़ा, थैंक यू. कांजीडी महेश्वरी, आओ आओ. घुटनों पे रख के हाथ खड़े थे नमाज में, आ जा रहे थे लोग जहन में तमाम और. मारो अवाज संभळाय छे ने तमने? अजय अरोड़ा, मारो अवाज संभळाय छे ने? कांजीभाई, अरविंदभाई, अवाज क्लियर आवे छे? घुटनों पे रख के हाथ खड़े थे नमाज में, आ जा रहे थे लोग जहन में तमाम और. કેટલો માર્મિક શેર છે. हमने भी पहली बार चखी तो बुरी लगी, हमने भी पहली बार चखी तो बुरी लगी, कड़वी तुम्हें लगेगी मगर एक जाम और. આ મયખાનાની વાત છે, જે મયખાનું હોય એની વાત કરી છે. हमने भी पहली बार चखी तो बुरी लगी, कड़वी तुम्हें लगेगी मगर एक जाम और. हैरान थे अपने अक्स पे घर के तमाम लोग, हैरान थे अपने अक्स पे घर के तमाम लोग, शीशा चटक गया तो हुआ एक काम और. शीशा चटक गया तो हुआ एक काम और. આગળનો શેર છે, આ ગઝલનો છેલ્લો શેર છે કે उनका कहीं जहाँ में ठिकाना नहीं रहा, उनका कहीं जहाँ में ठिकाना नहीं रहा, हमको तो मिल गया है अदब में मुकाम और. हमको तो मिल गया है अदब में मुकाम और. આ ગઝલ પૂરી થાય છે. બીજી એક ગઝલ રજૂ કરું છું. બીજી એક ગઝલ છે. अगर खुदा न करे सच एक ख्वाब हो जाए, अगर खुदा न करे सच एक ख्वाब हो जाए. परमार अंकित, थैंक यू, आओ. अगर खुदा न करे सच एक ख्वाब हो जाए, तेरी शहर हो मेरा आफताब हो जाए. तेरी शहर हो. अगर खुदा न करे सच में एक ख्वाब हो जाए, अगर खुदा ना करे सच एक ख्वाब हो जाए, तेरी शहर में मेरा आफताब हो जाए. हुजूर आरी जो रुखसार क्या तमाम बदन, हुजूर आरी जो रुखसार क्या तमाम बदन, मेरी सुनो तो मुजस्सिम गुलाब हो जाए. मेरी सुनो तो मुजस्सिम गुलाब हो जाए. उठा के फेंक दो खिड़की से सागरों मीना, उठा के
फेंक दो खिड़की से सागरों मीना, ये तिश्नगी जो तुम्हें दस्तयाब हो जाए। ये तिश्नगी जो तुम्हें दस्तयाब हो जाए। આગળનો શેર છે, जो बात कितनी भली है जो आप करते हो, सॉरी, वो बात कितनी भली है जो आप करते हो, सुनी तो सीने की धड़कन रबाब हो जाए। सुनी तो सीने की धड़कन रबाब हो जाए। बहुत करीब ना आओ यकीन नहीं होगा। बहुत करीब ना आओ यकीन नहीं होगा। ये आरजू भी अगर कामयाब हो जाए। ये आरजू भी अगर कामयाब हो जाए। गलत कहूँ तो मेरी आकबत बिगड़त है। छेल्लो शेर छे दुष्यंत कुमारनो आ गजलनो के गजल कहूँ तो मेरी आकबत बिगड़त है, जो सच कहूँ तो खुद ही बेनकाब हो जाए। એટલે ખોટું બોલું તો ચાલી જાય એવું છે આજના જમાનામાં, પણ સાચું કહું તો મારી ખુદી બધાને ખબર પડી જાય। एक આગળની ગઝલ છે કે बाढ़ की संभावनाएं सामने है। बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर। इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। આગળનો શેર છે, आपके कालीन आओ तरुण परमार आओ। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन। इस समय तो पाव कीचड़ में सने हैं। इस समय तो पाव कीचड़ में सने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में। हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए। हम सफ़र ऊँघे हुए हैं अनमने हैं। हम सफ़र ऊँघे हुए हैं अनमने हैं। आ लाइवनी दुष्यंत कुमारनी छेल्ली गजल रजू करीने आ लाइव આપણે પૂરું કરીએ છીએ। આ છેલ્લી ગઝલ, ये जुबा हमसे सी नहीं जाती। ये जुबा हमसे सी नहीं जाती। जिंदगी है कि जी नहीं जाती। ये जुबा हमसे आ એટલો માર્મિક શેર છે કે સાંભળો એટલે મજા જ આવે, વાંચો એટલે મજા આવે। ये जुबा हमसे सी नहीं जाती। जिंदगी है कि जी नहीं जाती। इन फसीलों में वो दरारें हैं। इन फसीलों में वो दरारें हैं जिनमें बसकर नमी नहीं आती। जिनमें बसकर नमी नहीं आती। देखिए उस तरफ उजाला है। देखिए उस तरफ उजाला है जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। देखिए उस तरफ उजाला है जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। आभार सर। अजय सिंह चौहान आभार आपनो। देखिए उस तरफ उजाला है। देखिए उस तरफ उजाला है जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। એટલે દુષ્યંત કુમાર આ શેરમાં એવું કહેવા માગે છે કે જે સંઘર્ષમાંથી જે આગળ આવે છે એ સફળતાને પ્રાપ્ત કરતો હોય છે। જેમ કાદવમાંથી કમળ જેમ ખીલી ઉઠે છે એવી જ રીતે સંઘર્ષમાંથી જે માણસ સંઘર્ષમાંથી જે આગળ આવે છે એ છેલ્લે સફળ થતો હોય છે, એવું આ શેરમાં કહેવા માગે છે।
कि देखिए देखिए उस तरफ उजाला है जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। शाम कुछ पेड़ गिर गए वरना, शाम कुछ पेड़ गिर गए वरना बाम तक चांदनी नहीं जाती। शाम कुछ पेड़ गिर गए वरना बाम तक चांदनी नहीं जाती। एक आ शेर सांभळजो, बहु सारो शेर छे कि एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। मैं कशो मैं जरूर है लेकिन, मैं कशो मैं जरूर है लेकिन इतनी कड़वी है कि पी नहीं जाती। इतनी कड़वी है कि पी नहीं जाती। मुझको ईसा बना दिया तुमने। आ शेर एटलो सरस छे अने बहु फेमस शेर छे दुष्यंत कुमारनो। सांभळजो तमे के मुझको ईसा बना दिया तुमने, मुझको ईसा बना दिया तुमने, अब शिकायत भी की नहीं जाती। मुझको ईसा बना दिया तुमने, अब शिकायत भी की नहीं जाती। एटले माणसने આપણે એટલો બધો મોટો કરી દેતા, આ શેરમાં એવું કહે છે કે માણસને આપણે એટલો બધો મોટો કરી દેતા હોઈએ છીએ કે આપણે એને આપણી જે સમસ્યાઓ છે એની ફરિયાદ પણ નથી કરી શકતા, અથવા તો આપણને એની સામે ફરિયાદ કરવાનું ઉચિત નથી લાગતું, એટલો એનું માન આપણે વધારી દેતા હોઈએ છીએ। આ શેરમાં એવું કહે છે કે ફરી એ શેર, આ ગઝલનો છેલ્લો શેર છે, ફરી રજૂ કરું છું। આભાર। કે મુझको ईसा बना दिया तुमने, એટલે માણસને એટલો બધો મોટો બનાવી દીધો કે એ મોટા માણસ સામે આપણે ફરિયાદ પણ નથી કરી શકતા। मुझको ईसा बना दिया तुमने, अब शिकायत भी की नहीं जाती, अब शिकायत भी की नहीं जाती। બીજી એક આગળની એક છેલ્લી ગઝલ રજૂ કરીને આપણે આપણું લાઈવ પૂરું કરીએ છીએ કે છેલ્લી ગઝલ છે દુષ્યંત કુમારની કે तुमको निहारता हूँ सुबह से ऋतुम्बरा, तुमको निहारता हूँ सुबह से ऋतुम्बरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा। आमा लवनी बात है आ शेर में के तुमको निहारता हूँ सुबह से ऋतुम्बरा, तुमको निहारता हूँ सुबह से ऋतुम्बरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा। खरगोश बनके दौड़ रहे हैं तमाम ख्वाब, खरगोश बनके दौड़ रहे हैं तमाम ख्वाब। खरगोश એટલે સસલું। आओ विपुल आओ। खरगोश बनके दौड़ रहे हैं तमाम ख्वाब, फिरता है चांदनी में कोई सच डरा डरा, फिरता है चांदनी में कोई सच डरा डरा। पौधे झुलस गए हैं मगर एक बात है, पौधे झुलस गए हैं मगर एक बात है, मेरी नज़र में अब भी चमन है हरा भरा। એટલે આજુબાજુનું વાતાવરણ આમ થોડું ઉદાસીન જેવું લાગે છે, પણ મારી અંદર એવી તાકાત છે કે પહેલાં જેવું સારું વાતાવરણ થઈ જાય। આમાં એવું કહેવા માગે છે કે પોઝિટિવિટી એક પ્રકારની બતાવે છે આ શેરમાં। पौधे झुलस गए हैं मगर एक बात है, मेरी नज़र में अब भी चमन है हरा भरा, लंबी सुरंग सी है तेरी जिंदगी तो बोल, लंबी सुरंग सी है। सुरंग એટલે પેલી સુરંગ હોય છે જમીનમાં ઊંડે ઊંડે ખોદેલી હોય સુરંગ, એની વાત છે કે
लंबी सुरंग सी है तेरी जिंदगी तो बोल, मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ है કોઈ સિરા. એટલે ત્યાં કોઈ જવાનો રસ્તો છે એવું કહે છે. લંબી સુરંગ સી હૈ તેરી જિંદગી તો બતા, मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ है કોઈ સિરા. છેલ્લો શેર છે આ ગઝલનો કે માથે पे रख के हाथ बहुत सोचते हो तुम. માથે पे रख के हाथ દુષ્યંત કુમારની આ ગઝલનો આ છેલ્લો શેર છે. પછી આપણે લાઈવ પૂરું કરીએ. માથે पे रख के हाथ बहुत सोचते हो तुम, माथे पे रख के हाथ बहुत सोचते हो तुम, गंगा कसम बताओ हमें क्या है माजरा. गंगा कसम बताओ हमें क्या है माजरा. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે આ લાઈવ હવે પૂરું કરીએ છીએ. અસ્તુ.